हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं 2020 हिस्ट्री के माध्यमिक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। मैंने जिसके पहले वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, उसके बाद का इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जिसने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसके बाद का ही इस वीडियो में है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Group C, answer the following question in 2 or 3 sentences, any 11। इसमें only 11 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 16 है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एज सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोइर्स। Third question is what was the principal objective of the Christian missionaries in introducing Western education in India? Fourth question is what is meant by Namabidhan? Fifth question is what was the significance of the Chor revolt? Sixth question is was the Farazi rebellion simply a religious movement? Seventh question is with what objective was the landholder society founded? Eighth number question is what was the contribution of the noble Anandamark to the rise of national awakening in the 19th century? Ninth question is what was the impact of the development of the printing press on the cultural life of the Bengal? Tenth question is why was the colonial system of education defective? 11 number question is write the name of two Indian historians who discuss the history of sports. 12th question is what do you mean by photography? 13th question is mention two features of writings published in the Bamabaudni Patrika. 14th question is who was called as Kangal Harinath and why? 15th question is what is meant by revolution? 16th question is when did Chor revolt start? Who was its leader? Group D, answer any 6 questions in 7 or 8 sentences, taking at least one from each segment. इसमें any 6 questions का आंसर देना है, वो भी 7 और 8 सेंटेंस में। और आपको each segment से at least one question का तो आंसर देना ही होगा। Subgroup D.1, first question is why is Wood's dispatch called the Magna Carta of the spread of education in India? Second question is explain Sri Ramakrishna ideas of Sarvadharma Samanya religious harmony. Subgroup D.2, third question is what was the attitude of the educated Bengali society towards the Great Revolt 1857? Next, fourth question is analyze the role of Surendranath Banerjee in the foundation and development of the Indian Association. Next, subgroup D.3. Fifth question is what is the contribution of urban history in writing history? Sixth question is how do government documents helpful in writing history of modern India? Next, subgroup D.4. Seventh question is describe the role of Ishwar Chandra Vidyasagar in field of women's education. Eighth question is what was the importance of Ram Mohan Roy in the religious movement? Next, group E, answer any one question in 15 or 16 sentence. इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए, उसमें से आपको कोई एक का आंसर देना है, वो भी 15 और 16 सेंटेंस पे, और वो क्वेश्चंस 8 मार्क्स का होगा। First question is give an idea of the various protests against the practice of sati in the first half of the 19th century. How did Ram Mohan Roy achieve success in the movement against sati? इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए 5 मार्क्स और सेकंड पार्ट के लिए 3 मार्क्स है, और टोटल मिला के हो गए 8 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑन एजुकेशन इन शांति निकेतन। थर्ड क्वेश्चन इज describe the use and misuse of internet in collecting historical information। और इसी के साथ ये टॉपिक अब यहीं एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं।